अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा जर्नी करते हैं ब्लू टाइगर के साथ AG30 और कराची कैंट से हम चलते हैं हैदराबाद जंक्शन। ट्रेन है बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 25 अप, इसको लीड कर रहा है ब्लू टाइगर 6026। बहुत अरसा हो गया था AG30 के साथ हमने सफ़र नहीं किया, तो सोचा आज आपको एक सफ़र दिखाएं ब्लू टाइगर के साथ। इधर क्रू बैठा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। शाम को 6:15 पर डिपार्चर होता है 25 अप का कराची कैंट से, जबकि 5:50 पे ये निकली है कराची सिटी से। आज 10 मिनट के करीब डिले है और 6:25 पे शाम को इसका डिपार्चर होगा। तो हैदराबाद तक आज अपना सफ़र करते हैं और आपको AG30 का साउंड सुनवाएंगे और थोड़े से मनाजिर दिखा सकें, क्योंकि रात हो जाएगी। पर मेन मकसद है कि आज AG30 के पीछे हम सफ़र करें और इसका साउंड कैप्चर करें। और ब्रेक वैन के अंदर मैंने अपनी सीट जो है वो की हुई है और 750 रुपये किराया कराची कैंट से हैदराबाद जंक्शन तक। तो चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, डिपार्चर हो गया 6:30 पे और ट्रेन हमारी निकल पड़ी है कराची कैंट से मुल्तान के लिए। हम आज का सफ़र करेंगे हैदराबाद तक।
अभी ट्रेन हमारी रिंग रोड जंक्शन पे आके स्टॉप कर रही है। कराची का मज़ाफ़ाती रेलवे स्टेशन। शाम को 7:10 हुए हैं और ट्रेन अभी लांडी जंक्शन पे पहुंच चुकी है। यहाँ भी स्टॉप करेगी बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस।
जी जुमा गोट्स रेलवे स्टेशन और 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस से रुकी हुई है जुमा गोट रेलवे स्टेशन पे। 7:28 हुए हैं शाम के। ट्रेन अभी रुकी हुई है पिपरी मार्शलिंग यार्ड और डिपार्चर हॉर्न यहाँ पे हो चुका है। आएगी वो नज़र आएगी। और AG30 ब्लू टाइगर की चेकिंग जो है वो जारी है। और आज की ये वीडियो स्पेशली ब्लू टाइगर लवर स्पेशल रेल फैंस के लिए बना रहा हूँ। बाहर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा पर आप सुन सकते हैं AG30 को।
कोटरी जंक्शन आएगा, दरिया सिंध क्रॉस करेंगे और फिर हमारी मंजिल हैदराबाद जंक्शन। दोस्तों रात के 9:12 हुए हैं और ट्रेन हमारी कोटरी शहर में दाखिल हो चुकी है। कोटरी जंक्शन पे स्टॉप होगा और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये कोटरी जंक्शन पे आके ट्रेन हमारी रुक चुकी है और 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होगा।
तो दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन। 9:55 पे हम पहुंचे हैं हैदराबाद जंक्शन। यहाँ तक आज का सफ़र था और स्पेशली ब्लू टाइगर में सफ़र करने के लिए मैंने ये ट्रेन चूज़ की। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।